Hello and welcome to Akanksha Against Harassment. Especially if parents are watching this video, I want you to listen to me very very carefully. ये शायद सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसी बात हो जो आपके बच्चे को फ्यूचर में सेफ रख सकती हो। हमने देखा है कि अक्सर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हम उनको बॉडी पार्ट्स तो सिखा देते हैं, एल्बो इज एल्बो, फिंगर्स आर फिंगर्स, फेस इज फेस, लेकिन जो प्राइवेट पार्ट्स हैं we teach them some very strange language. कुछ ऐसे हम slangs use करते हैं, this is your pee, this is your vv, this is your cookie, and that is very very wrong, and I'll tell you why so. क्योंकि बच्चे के मन में ऐसा इम्प्रेशन बैठ जाता है कि ये कुछ ऐसी शेमफुल बॉडी पार्ट है या इतना डिस्गस्टिंग बॉडी पार्ट है कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है, और अगर मैं बात करूंगा या करूंगी तो शायद आई गेट पनिश्ड फॉर इट. एंड व्हेन गॉड फॉरबिड इफ दे आर एवर सेक्सुअली अब्यूज्ड, दे आर सो स्कैर्ड, दे आर सो कंफ्यूज्ड. शुड आई टेल माय पेरेंट्स अबाउट दिस और शुड आई नॉट टेल माय पेरेंट्स अबाउट दिस? क्योंकि मॉम या डैड तो इसको बात ही नहीं करते ये प्राइवेट पार्ट के बारे में. अगर मैंने उनको कुछ बताया तो दे आर गोइंग टू पनिश मी अबाउट इट. Forget sexual abuse. Children are scared to even talk about any pain in their private body parts, in their genitals. They are scared to even talk about any infection out there. वो तो बहुत टाइम तक बच्चों को बताते ही नहीं है. According to American Academy of Pediatrics, 89% of children know their body parts very well except their private parts, and only 10% of children know what it is really called. जो ये सेक्सुअल प्रेडेटर्स होते हैं, वो जब कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको अपने बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छी तरीके से पता होते हैं, दे नो व्हाट बॉडी पार्ट इज कॉल्ड, व्हाट देयर जेनिटल्स आर कॉल्ड, द प्रेडेटर नोज कि ये बच्चा जाके अपने पेरेंट्स को क्लियरली कॉन्फिडेंटली बताने वाला है. And they may or may not breach that boundary, but when they see that a child anyways is so scared or so ashamed of even showing their body to anybody else, they are more likely to take advantage of such a child. Please, I would request you to sit down, find some teachable moment with your children, sit down and don't make it look like there's any body part they need to be ashamed about. This is really going to hit their self-esteem, their self-worth. Even in long run, हमने देखा है कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, adult भी हो जाते हैं, they are not able to be confident about their entire body image. So if you really want to keep your children safe, not just in schools, even parents, kindly teach them the correct wordings, the correct name of their private parts. Teach them that nobody is supposed to breach that boundary, nobody is supposed to teach them there, and teach them confidence that should they want to talk about it, should they be curious about it, they should come to you first. Keep your child safe. If you want to talk about this with my team, you can write to teamakanksha@gmail.com. Stay aware and stay safe.